चलो भाई, अगर आप लोग जरा क्लास में पार्टिसिपेट करिएगा, बताते रहिएगा। अगर आपने अगर कॉइन टॉस किया तो आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2। क्या हो गए? हेड और टेल। हेड और टेल, ठीक है। अच्छा जी, डाइस को रोल किया वंस, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? 1 6। 2 3 4 5 6, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। ओके, अच्छा जी, आपने क्या किया? 2 कॉइन्स टॉस्ड, अब बताइए, ये तो हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, टेल, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अ डाई इज रोल्स वंस, ठीक है। जैनब अली ज्वाइन कर रहे हैं? Yes, sir, he's joining. तो a dice is rolled once, find the probability of getting an even number. अब आप कहेंगे कि सर इवन नंबर मेरे पास 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है और टोटल आउटकम्स कितने, ठीक है। तो इन इवन नंबर, तो वी हैव गॉट टोटल 3 इवन नंबर्स और टोटल नंबर्स जो है वो 6 है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई ऑफ गेटिंग। प्रोबेबिलिटी के लिए पी यूज करते हैं ऑफ इवन नंबर, बात समझ आए? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। तो आपने कहा सर लेस देन 5 वाले मेरे पास 4 नंबर्स हैं, ठीक है, एक कह देते, तो 4/6, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने याद रखना है कि आपके पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगर किसी चीज की, अच्छा, जब हम टॉस करते हैं कॉइन को तो हमारे पास हेड की प्रोबेबिलिटी आधी होती है और टेल की प्रोबेबिलिटी आधी होती है, तो इसका मतलब 0.5 और 0.5 हो गई, ठीक है। यानी इसका मतलब कि 1/2 और 1/2, सही। तो फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं और डेसिमल्स में भी ले सकते हैं। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी दैट स्कूल विल रिमेन क्लोज, अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.25 है तो स्कूल विल ओपन की कितनी प्रोबेबिलिटी है भाई? 0.75, ठीक है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, यानी जब दोनों फ्रैक्शंस को प्लस कराओगे तो आंसर तुम्हारे पास 1 आना चाहिए, सही। ये बात समझ आ रही? ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहो, सवाल में यूज होगी, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, आगे चलो। ये कौन है सर? आपने भेजा ये? चलिए, आप तुमने भेजा है ना मुझे? जी सर, मैंने भेजा आपको। ओके, तो इंग्लिश था। So sum of probability is always going to be 1, okay, and if it is like in fractions, so it should be in like
सम जो है वो 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दो तरह की जो है ना कंडीशंस होती है, एक होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। सर सर आप पिछले पेज में वापस जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। सर हो गया। इसको हम कहते हैं, डिपेंडेंट को कहते हैं एक्सक्लूसिव, सॉरी इंक्लूसिव, और वो एक्सक्लूसिव। भाई देखिए, अगर आपने लेट सपोज एक ब्लैक कलर चूज किया, ठीक है, 3 कलर्स, ब्लैक, यू गॉट ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, okay, and you have got 3, let's suppose you've got 3 balls, 3 colored balls, okay, or you can say 3 anything, 3 marbles. So there's a black marble, there's red marble, and there's green marble. So if you have chosen a black marble, does it make any difference on choosing green or red? Like agar aapne, if you have chosen a red color or a black color or a green color, so is it going to affect your choosing of the other color? Yes. Yes. Yes or no? I just want to say that if you're choosing black color, okay, are you independent of choosing a black color, or you have to choose a red or a green, or they have something that like correlated between them? No, black color I've chosen is black color. Okay, black color is black color. Are you getting or not? Yes, sir. Okay. So while looking at the question, you'll come to know that there are some of the like scenarios where you have probability that is inclusive and some are exclusive. Okay. There are other things like that we do probability questions. Some of them are with replacement, and without replacement. Okay. With replacement means that when you have chosen something and then you put it back, so the total number of things is not going to decrease, because once you have chosen, you're putting it back as well. Are you getting? Not getting? Okay, look here. You have got red, blue, and green balls. Red balls are 2, uh, or you can say 4 red colored balls, 3 blue colored balls, and 1 green colored ball. Okay. So the question says a ball is chosen at random. Okay. Without replacement. Okay. What is probability to get a green colored ball? So it's 1/8. Okay. Another ball is chosen. Another ball is chosen. What is the probability to get blue colored ball? No. Now you don't have 8. 1 is gone. 3/7. Okay. 3. Yes. Okay. Then if you're considering that that one was green, so that one is gone. Okay. So this is the thing which you're going to apply in the tree diagrams, where you have to complete the tree diagrams. Okay. In today's lesson, we are going to hit for the tree diagram.
So let's start with that. Okay. समझ आ गया भाई? Done. नोट डाउन कर लो सारा इंपॉर्टेंट है. O levels के अंदर ट्री डायग्राम्स है. Very confusing, but IGCSE में tree diagrams are gone, so you can easily do them. Like it can be a 2 marker max, okay, but tree diagrams will be used to find the probability of some scenario based questions which can be of 3 marks as well. ठीक है? अगर examiner को if the examiner is making a paper like which is going to take revenge from you, okay, and it's something at a difficulty level, so you will get more questions from probability. So just pray that you don't get many questions from probability. Believe me, yeah. Okay. स्पेशली ओ लेवल्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, ओ भाई वो तो बहुत. जैसे 2024 का पेपर था समर का, इट वाज लाइक सो मेनी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस. उसके बाद मैंने ओ लेवल्स के मैथ्स पढ़ानी छोड़ दी. सब प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, इजी होते हैं? इजी होते हैं, कर तो रहे हो तो भी पता चल जाएगा. ठीक है. Okay, so now we're doing all done. Okay, so this is a very good chance for those who haven't studied this to know about this. अयान होता है, अयान को सबसे ज्यादा इसमें मुश्किल है और ये नहीं है वो. उमर रिकॉर्डिंग हो रही है ना? और तुम शेयर भी करते जा रहे हो सब कुछ अपलोड कर. ठीक है. अभी वो ईद का खुमार ही नहीं गया अभी तक. हाँ, ईद का खुमार नहीं गया अभी तक. वो जब कोई पढ़ेगी ना, मॉक का रिजल्ट आएगा, फिर पता चलेगा, फिर सारे होश में. सब हमारी छुट्टियां खत्म, सब अब पढ़ाई के ऊपर आ गए. ठीक है. लाइक मैंने भी जितना करना था चीज़ों पे वीकेंड पे तुम लोगों को लेसन्स नहीं दिए थे मैंने, तो उस समय बिजी भी था. बाकी अब इंशाल्लाह ताला आपको एग्जैक्टली वो रिस्पॉन्स मिलेगा जो एग्जाम्स के वक्त मिलना चाहिए. नो लेजर टाइम एंड नो फन टाइम, नो यू कैन से नो चिलिंग सी. ओनली डंडा एंड पढ़ाई, ओनली डंडा एंड पढ़ाई एंड बेइज्जती. दैट्स इट. सब पिछले पेज में एक मिनट जा सकते हैं? पिछले पेज में मैं जाऊंगा, पहले कंप्लीट कर लूं. मैंने कंप्लीट करवाने भी तो थोड़ा सा. अच्छा भाई, चले मैं थोड़ा सा फिल कर देता हूँ उसको, ताकि आप लोग इसको जो है बाकी आप लोग फिल करो. सर ये जो ट्री डायग्राम की तरह या दिस ट्री डायग्राम, और फिर हम ट्री डायग्राम से चीजें भी सीखेंगे. दैट हाउ वी डू. ठीक. So this is 5/8. Okay, we have to find this one. This one. 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 Okay, so we have taken, this is something, draw का मतलब क्या है? We have taken something, let's suppose these are balls or anything, and this is without replacement. Okay, so the probability that in the first, without replacement, okay, without replacement, the probability that you're going to have the first draw getting a white color is 5/8. So what is going to be the probability that in the first draw we are going to get a black color? 3/8. 3 upon. Very good. 3. Very good. Okay, perfect. Alright. What is going to be the probability of getting a white in the second row? Oh. Yeah, so there are total, there are 5 whites. I've just taken one of them. How many whites are left if the first one is white? 4. 4. 4. There were 5 whites and 3 blacks in all. Out of those, ठीक है,
अब देखो, अगर पहला, if the first one is a white, and the chances of getting a second one is white, so we are going to have 7, because now there's 7 left, total 7. देखो, what was it? White balls with 5 and black balls with 3. Okay, getting? So Yeah. now we've got, out of that, one is gone, so we're left with 7, and over here I'm going to write 4. So what I'm going to write for the black one, so easy. I have to sum up and make the fraction 1, and it's quite 3 over obvious. 7. 3 over 7. 3 over 7, because all the three blacks are available. Okay, so it's going to be 3 over 7. Okay, next, if the first one is black, and what is the probability of getting a second one is white? 4/7. So सबसे पहला, the first thing you're going to do, Plus 7. the first thing, 5/7. the first thing you're going to do is to write 7 in the denominator, because 1 is gone. But because the first one was a black, so we have got all the 5 whites available to be taken on the second chance. So it's 5 over 7. And because one black has already been taken, so I'm going to write 2 over 7. Okay, this is how you complete the treatment. 2. That's good. Okay, understood? Now, if we are being easy peasy, okay? Now, if you are being asked about some conditions, okay? So, like simple conditions. Find the probability that you get 2 white. Okay? 2 white means, yeah, white and white. White and white. Okay? So, the first white is the probability is, okay? So, first one should be white and the second one should also be white. So, white, look here, white and white. And there could be the other thing, white or white. There's a difference. So what do you guys think? Is this white and white or white or white? White and white. White and white, okay? So it should be 5 upon 8 multiplied by 4 upon 7. Okay? So this and is always multiplied and all is always added. Okay? Logic gate. Okay? Yes, कौन sir. है meeting? Yeah, please I am meeting को कौन है? Who is this? Sir, the probability is 20 upon 56. What's the probability of getting a new student in the class? कौन था? हाँ बताओ, तो ये क्या हो गया? 20 over 57. And we usually do not cancel out. Okay? Who is this, by the way? Oh, oh. Okay. So this is the probability that सर पिछले पेज में जा सकते हैं? ये लो पिछले पेज पे
ठीक है? अच्छा, okay. A white and a black. सर एक मिनट वापस जाए, मैंने स्क्रीनशॉट दिया, आईपैड बंद हो। अरे यार इफ्तारी के टाइम होने वाले, जल्दी करो। हो गया सर, हो गया हो गया। ऐसे a white and a black. So a white and a black, no? So we can have the first one is a white and the second one is a black. Okay? Are you getting? So it's going to be 5 upon 8 multiplied by. So for the first one, traffic 5 upon 8, okay, from the first one. The first one is a white and the second one should be, okay, this is the first case, okay, first one white, second one black. There can be another case that the first one is a black and the second one is a white. Yeah, so you're going to 3 upon 8 multiply by 5 upon 5 7. upon 7. Exactly. So we are going to write plus. Okay. All right. That's done. Okay. I just need to quickly recap. Some of the students have just joined. Okay. So let's do it as quick as possible. Probability is basically the game of chance. Okay. Possible outcomes mean that when you do something, how many possible results can be there. For instance, if I've tossed, like I've rolled a dice, there are 6 possible outcomes. I'm saying what's the probability of getting an even number. So from there, I've got 3 numbers, that's 2, 4, 6, and the total outcomes can be 6. So 3 over 6 is going to be the probability while tossing the dice, I roll the dice once and getting an even number. Done. Sum of probability is going to be 1. Probabilities can be expressed in terms of decimal or in terms of fraction. For instance, if the probability of getting an even number is 3 over 6, so the probability of getting an odd number is also 3 over 6, because when I add them, I should get a 1. Okay? Is this clear? Yes, sir. So probability school will remain closed is 1 over 4. So the probability school will remain open is 3 over 4. Then we did this, okay, that we can have cases which are inclusive, means they depend on each other, and exclusive means they do not depend on each other. Okay, so we can have cases in which we are replacing or without replacing. Without replacing means that one thing is gone. I just give an example. A ball is chosen at random, so there's 4 red balls, 3 green balls, and 3 blue balls, and 1 green ball. So a ball is chosen at random without replacement. What is the probability of getting a green colored ball? I have got 1 green color and the total colored balls were 8, so it was 1 over 8. Sir, 1 by This is without replacement. So that means if that green is gone, I do not have that green. So my total color, which I have is 7. Okay, of getting a blue color, okay, ball is 3. Okay, are you getting or not? yes, sir. Okay, so 3. This is the without replacement. If we did a tree diagram in which we were having white, black, and red and black, and only the first this was given. Rest we didn't have anything. Okay, only this was given. So when I saw that yaar mera pehla wala jo hai wo, if it's 5 upon 8, then obviously black is going to be 3 upon 8. Now for the second draw, because it's without replacement, so if one is white, so there were total 5 whites. So now there'll be 4 whites, and the total available will be 7. Okay, and then for the blue ones, for the black ones, all 3 were, but they were total 7 ones because 1 white has been taken away, chosen. Okay, now the second one is a black. So if the first one is a black, for the probability of getting the second one is white, so what we do, we have got all 5 available because the first one which was chosen was a black. So the probability is going to be 5 for all blacks, but the total ones are not 8 now because I have taken 1 black, so the total ones is 7. Okay, and because 1 black is already been taken in the first draw, so for the second draw we'll have 2 blacks available and the total will be 7. Okay, now the probability of getting 2 white, so the probability of getting a white for the first one and a white for the second one, so the probability of getting a white for the first one was 5 upon 8 and that getting for the second one was 4 upon 7. Okay, so this is white and white.
First one is white, and so for and we use multiply. Okay. Now the probability of getting a white and a black. So there are two possible scenarios. The first one is white and the second one is black, and the first one is black and the second one is white. So the probability of getting the first one white is 5 upon 8. Okay. And the second one black is 3 upon 7. Or or this could be another case that the first one is black and the second one is white. Okay. I hope it's clear to all of you. So this gives you 15 over 56 plus 15 over 56, and the final answer is 53. Yeah, you don't cancel out. Yeah, you don't cancel. Clear? आ रहे समझ में? जी sir. Okay. So this can be your possible question for your paper 2 or paper 4 as well. From there, they're going to ask something. So this is a 3 marker. Okay, this was once asked. So let's do quickly because iftar ka time hone सर कौन सा इफ्तार का टाइम? wala. अरे सर रोजे तो खत्म हो गए. खत्म हो गया. सर कब के आपके पास ईद नहीं हुई? उमर और मैं रख लेना. उमर रोजा है ना? रमजान वाली वाइब्स क्रिएट करना चाहते हैं आप. जी सर. Okay, this is a 3 marker, and I'll give you 3 minutes to complete this. We're good. 3 minutes or more than 2 minutes or more than enough. Okay, start.
शाहज़ैन मीटिंग में है। Okay, wonderful message. Once you're done, you can send the answer in the group. Send the answer in the group. Done? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Question. Okay, 710, 310, 609, 309, 709. Okay. 800. Good. 200. क्या बात है शाहज़ैन, शाबाश. Okay. Two different colors. This is शाबाश. Very good. Very good. Very good. Very good. यार अली, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी जब तुम मुझे अपना आंसर बताओगे. प्लीज. Ali, are you there in the meeting? Yes, sir. Perfect. समझ आ रहा है? Sir, I just came. Just came. Okay. Teacher, I did not understand anything. Zaina beta, are you done? Yes, sir. I'm just sending it. Okay. So far, I've just got one answer. What Usmani you haven't sent? Okay. अल्लाह तुमने कर लिया, अगर तो मुझे भेजो ताकि समझ आए. इस क्लास में फोन अलाउड है. बड़े भाई, मैं तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर चेक करूं या मैथ से चेक करूं पहले, ये बताओ. ठीक है. गुड गुड गुड. ये कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट आंसर निकाले है ना. 8/15 आ गया. ठीक है. अगर ये नॉन कैल्क में होगा तो आपको सॉल्व करके दिखाना होगा पूरा. ठीक है. अच्छा नहीं यार, इस तरह मैन्युअली कर लेंगे. शाहज़ैन ने बड़ा जबरदस्त किया है माशाल्लाह से, शाबाश. ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ फिर. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसको फिल कर लेते हैं. ठीक है, तो यार ये हो गया 3/10. ठीक है. अच्छा, पहला रेड हो गया तो दूसरा जो है वो रेड होगा. एक रेड बेचारा जा चुका है, तो अब टोटल 6 रह गया रेड और 9 नीचे आ जाएगा क्योंकि एक कम हो गया. ब्लू तीनों की तीनों अवेलेबल है हमारे पास, मगर टोटल 9 हो गए क्योंकि रेड हम उठा चुके हैं. तो एक टोटल बॉल में से एक कम. पहला ब्लू है और दूसरा रेड है, तो भाई सातों के सातों रेड हमारे पास है. ठीक है, मगर हमारे पास एक कम हो गया, तो ये 2 है. बहुत आसान है, यानी कि आप दोनों को ऐड करके 1 बना. सेम कलर का मतलब रेड रेड, तो रेड रेड हो गया 7/10. ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय दूसरा वाला भी रेड है 6/9, ये दोनों रेड रेड हो गए। और ब्लू ब्लू, तो ब्लू ब्लू 3/10 हो गया इंटू 7/2/9, ये दोनों ब्लू ब्लू, ठीक है। So 1 is 42/90 plus 6/90, so that gives you a 48/90. There's no need to cancel. Okay, cars of different color means a red and a blue, or a blue and a red. So a red and a blue is 7/10. A red and blue, red and के लिए मल्टीप्लाई लगाते हैं, पहला red दूसरा blue, Sir, simplify नहीं करना? नहीं सिंप्लीफाई कर दोगे तो गलत नहीं होगा। पहला blue दूसरा red, पहला blue दूसरा red, ठीक हो। तो क्या हो गया 21/90 plus 21/90, so that is going to be 2/90। ओके, ठीक है उमर, समझ आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। इसका तो बेकार है, बनाइए उसकी 2 मिनट में टैब गायब हो जाती है। चलिए, यस, 7 बाइस 2 टेलीविजन, 2% टैक्स। ओके, probability that television is faulty is 0.02, ठीक है, 0.02। ओके, फर्स्ट टेलीविजन, सेकंड टेलीविजन, faulty and not faulty। Okay, what's the probability that the first one is faulty, second one is not faulty and faulty? And faulty and you have to complete this. Okay, probability divides to 40 numbers. Okay, this one, this one, this one, this one, this one, this one. Stop. सर, Yes. मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको भेज सकती हूँ, आप अभी करवा सकते हैं। अब मुझे भेजिए, अगर मुझे आता होगा तो करवा दूंगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं करवा। क्या हुआ, मैं ओ लेवल्स की मैथ्स पढ़ानी छोड़ दी, मुझे पता है कितने खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। मैंने यहाँ बच्चों से चश्मे में ले रहे होते हैं। सर भेज दिया मैंने। ये तो इजी है, बिल्कुल इजी। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क का होगा मेरे हिसाब 3 मार्क्स। से। ठीक है, करवा दो। ये वाला करो जल्दी से, रोजे का टाइम होने वाला है। ठीक है, आई मीन टू से नमाज का टाइम।
सर आंसर मिल गया। Hello. Can't you guys hear me? मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस। ये वाला बच्चा कौन? ये एलियान नियाजी कौन सा बच्चा है? साथ है। But it just one. अगर पहला टीवी, if the first TV is faulty, that does not make any difference that the second TV is not faulty, okay? Or it's faulty. They are independent ones, okay? So the first TV is a faulty one, okay? And there is again the probability that this always that the probability that TV is faulty is 0.02. 0.02. So we don't care about for the first one, okay? And that's going to be 0.02. 0.02. So how much is going to be? 0.98. Okay, 0.9 for this one. Okay, again 0.02. Okay, so this is something which we call independent or exclusive. Okay, because the first one is not affecting the results of the second one. So the final probability that pass 240 TVs. So the first one is 40 and the second one is 40 as well. So it's going to be 0.02 times 0.02, and you can use your calculator to find out. Okay, so this type of question can also be asked in exam. I hope it's clear. यस सर। Oh my goodness. Okay. Very nice. One of my students is traveling. She's in the car and doing the work. Nice. There you go. Keep it up. Sure. रोज पेपर्स के साथ क्या मुसीबत है? कोई और ऐप ऐसी होती है कि आप 1 मिनट के लिए रुके कोई और काम करें फिर वो ऐप गायब हो जाए? हर बार उसको रिक्रिएट करना पड़ता है। भी पेपर्स क्रिएट किए फिर तब करते हैं। Okay, is this question clear to all of you? This should be. Let's move Yes. on. No, no, we have some more topics to do. छोटे छोटे माइनर टॉपिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, सिमेट्री है, मैं देखूंगा फिर और क्या क्या माइनर टॉपिक्स।
Okay. Bag A, bag B, each contain. अच्छा यार ये स्कूल वाले बच्चे तुम लोग बता दो व्हाट टाइम यू गाइस आर कमिंग पाकिस्तान के 5 पीएम पे सब अवेलेबल हो ना इफ आई वांट टू कीप अ लेसन ज़ैनब अली तुम लोग बेटा अपडेट करो मुझे जरा व्हाट टाइम यू गाइस आर कमिंग Sir, we come back at 3. come back 3 so it's possible for you to take class at 4 yes or no Sir, we can take it. It's fine. so sometimes you have to like sometimes we'll have double classes Sir, it's okay because we only have school this week and then next week it's study leave. So this is a 4 mark question that we have to wait for some time because my prayer time so I need to go try करना नमाज के टाइम 4 mark का रहेगा ठीक है 4 mark का क्वेश्चन so give a try okay then मैंने क्वेश्चन भेजा है इन्होंने तो मैं इंशाल्लाह आगे करवा दूंगा so just look for it and I hope you also be able to okay give a try it's 4 mark well done question
Sir, done. Okay, so you know you can do one more thing. You can subtract from 1 the probability of cards not having the same color. Okay, like if you do it, are you getting? So you can do it like this: 1 minus. So if you have to get the probability of same color, so you do 1 minus different color. You'll get that. Okay, so this is what we're going to do over here. The first thing they've given us is 0.25 is the probability. Okay, Chen picks from bag B. Okay, Stephen picks counter at random from bag A. Stephen takes red counter is 0.4. So we have got two bags. Okay, there's bag A and bag B. So the first counter Chen picks from bag. Okay, Stephen has taken counter from bag A, and the probability is 0.4. Red counter. Okay, all right. So what is the probability of having blue counters in bag A for Chen? For Stephen, sorry, 2.6. Okay, and Chen and Stephen both has taken a red counter is 0.25. 0.25. Okay, but they told us that Chen is taken from bag B. You get it? Okay, so the total probability of getting a red, okay, from bag A 0.4. Okay, and they both are getting. So what we need to do, we have to subtract because we need to talk about blue counter. Okay, so the total probability of getting red is 0.4. Okay, from bag A. So the probability of getting a blue from bag A is going to be with me. This is something important. The probability of getting, because this is for both of them. Okay, so the total probability is 0.4. So it's going to be 1 minus 0.25. Okay, this is for both of them. Multiply by probability of getting a red from bag A 0.4. So it's 1 minus. This is for bag A, and that one is for bag B. So Stephen is taking a red counter is 0.4. Okay, getting or not? And they both pick a red is 0.25. So 0.25 divided by 0.4. Okay, minus 1. That's for bag B. Multiply by for bag A is quite, because we need to talk about the blue counter. This is the probability of red. This is the probability of red. Yes. Okay, ठीक है. क्या आंसर आ रहा है अभी? Sir, मैंने भी ऐसे ही है. 0.291. जी सर. आंसर है इसका 0.225 इसका आंसर आ रहा
जो मेन मसला है ना दैट इज फॉर जेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेन गेटिंग एन एड? जी सर, क्योंकि 0.4 और x का जो प्रोडक्ट है वो 0.25 है, वो 0.25 है, तो फिर आपको 0.25 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ओके, ये हो सकता है ना 0.4 इनटू द प्रोबेबिलिटी, इसको p कह लेते हैं, इज इक्वल टू 0.25, ये बोथ की है ना, दिस एंड दिस, ठीक है। So P is 0.25 divided by 0.4. How much we getting? 0.65. 0.25 divided by 0.4. Okay, 0.65. तो अब देखो हमें जेड की प्रोबेबिलिटी मिली है ना, तो अगर मुझे ब्लू माइनस, तो 1 माइनस 0.65, ओके, मल्टीप्लाई बाय फॉर दैट गाय स्टेफन, वो तो मेरे को क्लियर था, 1 माइनस 4, देखो 325. Okay, what's the answer? Yes, due to some calculation mistake. Otherwise, you would have got the answer. Okay. Alright, guys. So I have to start the other lesson. Okay. कल इंशाल्लाह क्लास करते हैं 5 PM पे, ठीक है, PST पे मैसेज करूंगा, ज्वाइन कर लेना। बल्कि यार कल मेरा ए लेवल्स का भी लेसन है, और कल करते हैं फिर हम लोग आईडी कर लेते हैं, ठीक है, और उनको 6:30 पे मुझे ज्वाइन करना होगा नमाज के फौरन बाद। ओके, ये जरा हैंड रेज कर लेना, कल 5 PST पे कौन कौन अवेलेबल है प्लीज। ओके, नो वरीज, ओके, लेट्स कॉम्प्लीट। Okay, guys. Inshallah, message you to join. Okay, so then.